Assalamu alaikum students, it's your maths first lecture number 1. Now we are going to learn first chapter. Its name is numbers and arithmetic operations. In this chapter we are going to learn a place value in words and numerals, compare and order numbers, addition and subtraction, multiplication, division, op, uh, four operations, and the word problems. Now first of all, you draw the line with blue color like this and write down the date with blue color on the top of your copy in left side, and the day on the right side with blue color. And you must be write the page number on the top of your copy. It's your copy page number 5. You skip the 4 pages for the syllabus, topic, title page, etc. Now we are going to learn the Pakistani place value. First of all, you make heading like this: Pakistani place value chart with blue color. What is a place value? प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की जगह को कहा जाता है कि उसकी जगह कौन सी है. सबसे पहले पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू, वी ड्रॉ द पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट. इन पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट इन दिस टाइम वी हैव 4 हाउसेज. हमारे पास 4 हाउसेज हैं पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट में. नंबर 1 इज़ अ वंस, सेकेंड इज़ अ टेंस, थाउजेंड्स, थर्ड lakhs and crores. In first house we have 3 members in a Pakistani place value: ones, tens, O means ones, T means tens, H means 100. In a second house we have 2 members in this house: 1000 and 10,000. In third house we have 2 members: lakh and 10 lakh. And the house number 4 name is a crore. In this house also we have 2 members: crore and 10 crore. Now we are going to write the numbers. First we write the 6 digit numbers: 2, 5, 6, 9, 8, 4. It's a 6 digit number. How can we read this number? I read it, you listen be carefully. 4 जो है वो हमारे पास लैख में आ रहा है, तो हम 4 को लैख रीड करेंगे. 4 लैख. वी कंबाइन द बोथ नंबर्स 8 एंड 9. 8 और 9 को कंबाइन करके रीड किया जाएगा 89. 4,89,652. नाउ द नेक्स्ट वी राइट द 7 digit numbers. हाउ कैन वी रीड दीज नंबर्स? वी कंबाइन द बोथ नंबर्स ऑफ द लैख के दोनों नंबर्स को कंबाइन किया जाएगा, 1000 के दोनों नंबर्स को कंबाइन किया जाएगा. वी डोंट हैव एनी नंबर्स इन 100. 53,65,000. वी डोंट हैव एनी नंबर इन 100, so that's why we skip the 100 and come to the next number, 96. I repeat again, 53,65,000 and 96. We write the 8 digit numbers: 2 crore, 37 lakh, 53,218. Now we are going to the 9 digit numbers. अब हमने 9 digit numbers लिखे हैं: 91 crore, 10 lakh, 40,000. It's a 40, not a 14. Too much difference between the 40 and the 14. It's a 40,356. It's a 9 digit number. I
थिंक यू क्लियर व्हाट इज़ द पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू। अपने पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू के नंबर्स को इसी तरह लिखना और इस टेबल को ड्रॉ करना है पेज नंबर 5 पे, अपनी कॉपी के पेज नंबर 5 पे। नाउ आपके पास एक क्लियर पिक्चर आ रही है, आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ब्लू कलर यूज़ कीजिएगा ताकि आपका चार्ट जो है वो अच्छे से ड्रॉ हो सके। नाउ देन आफ्टर दैट वी शोइंग द पीरियड और कॉमा। पीरियड और कॉमा दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन मैथ्स में ज़्यादातर मोस्टली जो है वो वर्ड पीरियड का यूज़ किया जाता है, पीरियड कहते हैं कॉमे को। ओके, आफ्टर 3 नंबर्स वी आर शोइंग द पीरियड्स। आफ्टर 3 नंबर्स यानी एक हाउस जहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होगा वहाँ हमें पीरियड शो करना होगा, कॉमा लगाना होगा। आफ्टर 3 नंबर्स वी आर शोइंग द पीरियड like this. After 2 numbers we are showing the period. First we are showing after 3 numbers and then 2 numbers and 2 numbers. Okay, now the next we are going to draw the international place value. What is the international place value? जैसे हमारे पास पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में डिफरेंट हाउसेज हैं और डिफरेंट जो हैं हाउसेस के मेंबर्स हैं, इसी तरह हम जो है वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में भी ड्रॉ करेंगे। यू मस्ट बी ड्रॉ द टेबल with the blue color very neatly and we are going to learn the house of international. There is a 4 houses in an international place value. First we have ones, second thousand, third millions and the billions. The name was changed, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल हाउसेस के नेम्स चेंज हैं। स्टार्टिंग के 2 नेम्स सेम है, सिमिलर हैं, नेक्स्ट मिलियन और बिलियन। First house we have a same members ones, tens and 100. But next house is 1000. They have a 3 members. पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या था, हमारे पास 2 मेंबर्स थे और यहाँ पे 1000 के भी हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, 1000, 10,000 and 100,000. Million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion and 100 billion. O means ones, T means tens, H means 100, TH means 1000, TH 10,000, H TH 100,000, million, M means million, TM 10 million, 100 million, HM, B means billion, TB and HB. Now we are going to start the numbers. First of all we write the 6-digit numbers. हम 6-digit numbers से start कर रहे हैं. The 6, 3, 2, 1, 6 and 7. 700,000, 61,236. 1000 से पहले जो 100 है, अगर हम उसे 100 रीड करेंगे तब भी हमें पता होना चाहिए कि ये अगर 1000 से पहले 100 आया है तो ये 1000 का 100 है और उसके बाद भी 100 आ रहा है। तो जब हम इसे इनवर्ड्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 761,236. The next we have a 7-digit numbers. 2,500,000, इसको लिखने में 500, 49,873. 8-digit number 65,412,000. We don't have any number in 100, so that's why we skip the 100 and go to the next number 39. 65,412,039. We write the 9-digit numbers. 300, it's the same rule in a million of 100 के million में भी वही सेम है.
3,300,000, 300,000,000, 21,987,000 and 654. Okay, the last number, 9,876,000,000 and 543,210. The next we are going to show the पीरियड इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में आप सोच रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है कि हम जो पीरियड मेंशन करेंगे, कॉमा लगाएंगे, तो उसमें क्या फ़र्क होगा. दे हैव अ सेम रूल. आफ्टर द वन हाउस वी आर शोइंग द पीरियड. आप एक हाउस के बाद, एक हाउस में जितने भी मेंबर्स होंगे उनके बाद हमें पीरियड शो करना होगा. दैट मीन वी आर शोइंग to after 3 numbers, then after 2 numbers, 3 numbers. पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में हम फर्स्ट जो है वो 3 नंबर्स के बाद पीरियड शो कर रहे थे, देन 2 नंबर्स के बाद. बट यहाँ पे जो है वो 3 नंबर्स का एक हाउस है, तीनों हाउस में 3 मेंबर्स हैं, तो हम 3 नंबर्स के बाद पीरियड शो करेंगे. I will show you the clear picture. I think you cleared the both charts, Pakistani and international. So you must be draw the place value chart from your classwork copy, पेज नंबर 5 and 6. दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट को सेपरेट पेजेस पे बनाइएगा ताकि आपका नीटली जो है वो वर्क हो सके. Now thank you class. You must be draw the place value and do practice in this topic. Allah Hafiz.